हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुडे। दिस इज पुनीत फ्रॉम शादी ओवरसीज एंड आज जिस होटल के बारे में हम बात करेंगे दैट इज नंबर 3 ऑन द टॉप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी होटल्स इन आवर लिस्ट एंड यस दैट इज मोमेंटोस बाय आईटीसी एकाया होटल इन उदयपुर। तो ये एक नया होटल है, जस्ट ओपनड अप फेयरली रिसेंटली एंड टू बी ऑनेस्ट मैं होटल गया हूँ। I have stayed there. It's a beautiful place to be in. And for a destination wedding, it's one of those places जो बिल्कुल unique है, बिल्कुल हटके है. It has a lot of pros. It has some cons. So let's discuss today in detail कि क्या अच्छा है इस होटल में और क्या नहीं है। आज हम होटल को रैंक करेंगे on the basis of 10 parameters. The first among those parameters is the approach and connectivity. As all of you know, Udaipur पहुंचना is fairly easy. 11 to 13 flights domestic flights land in Udaipur every day, around 90 to 91 flights in a week. All the major cities like Mumbai, New Delhi, Surat, Rajkot, Hyderabad, Bangalore, Bhopal, Indore and some of the cities, ये directly connected हैं उदयपुर से via domestic flights. So if you are based out these cities, या आप इसके पास रहते हैं, यहाँ तक जाइए and take a flight directly to उदयपुर. ये करने के बाद people who are living in Rajasthan or close to उदयपुर और जयपुर can drive to उदयपुर also. Highway बहुत अच्छा है, it's clean and neat. And it's sort of an expressway और बहुत clean और easy drive है towards Udaipur. Let's talk about the approach to the hotel. From the airport, the hotel is around 1 hour. 1 घंटा दूर है airport से. Last 15 minutes while you reach the hotel, वो काफी bumpy है. But before that 15 minutes, the initial 45 minute की drive is very smooth and it's a highway. और exactly the unique thing about this hotel is इसकी lobby उदयपुर में है, but the rooms you cross a bridge and then you reach the rooms on a hill. वो hills अलग district में है. So many people who don't know about this fact, that is उदयपुर में lobby है और सारे rooms, the suites and everything सब दूसरी district में है across the bridge. And unlike other good hotels in उदयपुर जो लेक साइड है या उनसे बहुत अच्छा लेक व्यू है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लेक नहीं है, but have a private channel of sort of a lake. तो एक venue से which is called the Enchanted Forest, you can do a lakeside setting also. It's very beautiful. The bride can come on a boat from the lake and then enter the venues. Venue पे आप संगीत कर सकते हो. Let's get into detail थोड़ी देर बाद में. अभी we were talking about the approach to the hotel. So the last 15 to 20 minute drive is a little bumpy. गांव के अंदर से होती हुई जाती है. It was safe. I'm not sure कोई पहली बार जाएगा तो शायद उसे शाम को या रात को वहाँ डर लगे. But it's generally it is safe क्योंकि they have adopted 2-3 villages आसपास. Adopted means they take care of those villages, they take care of the roads and everything and the social activities so that the villages also help these people in carrying out the day-to-day activities which happen. So basically अच्छा गठबंधन है दोनों के बीच में. So there is no danger as such और it's a very smooth and clean drive. Last 15 minutes as I told you bumpy है but don't mind that because once you reach the venue जो नजारा आप देखोगे जो value और money आपको मिलेगा ना that is out of the world. In terms of the connectivity and approach because of the last 15 minutes bumpy drive I would rate it 8 out of 10. The second thing that we always consider is the rooms and the classification of rooms. It has 117 rooms in total, जिसमें से they have a grand presidential suite, a presidential suite, and surprisingly this grand presidential suite and the presidential suite can accommodate up to 12 people. एक छोटी मोटी gathering or smaller functions like मायरा भात ये सब इसी के premises में हो सकता है. They have a huge lawn. They have surprisingly temperature controlled swimming pools also. वो temperature controlled pools are there in other suites also, but presidential suite when you see it from the top एक हिल पे खड़े होकर आप नीचे देखते हो इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. आपको लगता है एक अलग छोटा होटल ही है. देन दे हैव देयर मैनर स्वीट्स, अदर स्वीट्स. कुछ स्वीट्स में प्राइवेट गार्डन्स हैं, कुछ स्वीट में अलॉन्ग विद द प्राइवेट गार्डन यू हैव टेम्परेचर कंट्रोल्ड हीटेड पूल्स आल्सो. सो आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ सेटिंग इन उदयपुर एनीवेयर एल्स. यू हैव टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल्स एंड अ प्राइवेट गार्डन एंड एक पूरे क्लस्टर का एक और छोटा गार्डन है. फॉर एग्जाम्पल इफ योर गेस्ट आर स्टेइंग 20 ब्राइट साइड गेस्ट आर स्टेइंग, द मेन फैमिली इज स्टेइंग इन अ विंग. उनका एक प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे वो जाके अपने छोटे मोटे कस्टम्स कर सकते हैं. So out of these 117 rooms that the hotel has, I'll tell you the classification also. So we have Valley View villas which are 60 in number, which are around 45 square meter. So by square meter, if you convert it into square foot, that is approximately 410 square feet. So I'll tell you the average room size of a 5-star hotel or a entry level 5-star hotel is around 275 to 325 square feet. Whereas इनके जो सबसे छोटे rooms हैं are in the range of 410 square feet or 45 square meters. That is by itself a very good thing. सबसे छोटा room भी एक normal category 5-star से बड़ा है. And the second category of rooms that they have is the Lakeview Villa, which are 31 in number, which are also in the same size. They just have a different view. Then they have Premium Villa. Premium villas are 15 in number, and the area of this villa is 63 square meter. That is bigger than their general room. And ऐसे 15 rooms हैं. Then they have their Mementos Villa. Mementos Villa are total 4 in number, and the area of the room is 127 square meter. So these 4 villas are huge villas. Again सारी facilities हैं. इन चारों villa को एक cluster बनाया हुआ है, where all the people from
from this villa can gather together and do their private party also. So if you are not there for a wedding or you are a group of well-bought people या you are friends of the groom, friends of the bride या फिर very close relatives, you can occupy these villas और आप एक private gathering वाली private party कर सकते हो वहाँ पे. So you have a separate common pool also and a separate common terrace also and a separate common garden also. And every villa has their own separate garden also. So imagine इतनी luxury है कि you have your own garden for some private moments. Then you have a common garden for all these villas. Then you have a common swimming pool. Plus you have a pool for yourself also. So imagine कि कितनी facility है hotel में. Then you have the presidential villa, which is surprisingly 514 square meter. आपका खुद का apartment भी इतना बड़ा होता है. इतना बड़ा इनका presidential suite है. And as I told you, it can accommodate 8 to 12 people in that area. So आप छोटी मोटी party तो अपनी वहीं कर सकते हो in your premises, your personal premises. This is one in number. Then you have the grand presidential villa. This is also one in number. Then they have their celebration villas, which are smaller 5 rooms built separately, which are 38 square meter. I'll tell you how to occupy these rooms. You can give these rooms to your vendors, to your event planner. आपको जब भी आप अच्छे level पे शादी करते हो तो आपके कुछ अच्छे ऐसे vendors आते हैं, like your makeup artist, like your photography team, like your event planner, the main person who is taking care of everything. Plus maybe कोई बड़ा artist आ रहा हो for a night. तो आप ये 5 रूम I would recommend personally आप vendor के लिए रख लो because these are smaller in size in the premises but ये अलग बने हुए हैं. Rooms and the structure of rooms I would rate it 10 on 10 because I've never seen such a setting ever. The third point that we always see is the food. So on a general note, trust me guys, ITC has always been known for the food. तो food को हमको consider ही नहीं करना चाहिए कि food को हम as a point लेके for ITC उसको measure करें. I would rate them 10 on 10 in terms of food. The fourth parameter that we always see is the provision for staff members and drivers. So direct provision नहीं है. They don't have a dormitory for your drivers or your staff. But आसपास in the nearby villages, probably another 15 to 20 minute drive जब आप वापस highway की तरफ जाते हो, अब you have smaller hotels with 20 rooms, 25 rooms, छोटे hotels हैं जिसमें your drivers can stay or your staff can stay. So ऐसे भी तो उनको वापस जाना पड़ेगा 15 मिनट, but you won't need your driver or your car या फिर आप you won't need your staff during this 2 or 3 night stay that you are planning in the hotel. So basically एक बार वो आपको छोड़ के वापस अपने छोटे होटल भी जा सकते हैं. I don't think you will have a problem with that. So basically direct there is no provision, indirectly there is a provision and close to the hotel. Just because of the fact कि होटल के पास अपनी dormitory नहीं है to accommodate drivers, I would give it 8.5 stars out of 10. Then the next parameter we judge a hotel is general help and the service. To be honest, it's an ITC luxury hotel and one of a kind Mementos, the first Mementos in India. So what do you think? कैसी service और कैसी उनकी compliance होनी चाहिए? I went there. I was greeted in a way जहाँ मुझे किसी और होटल ने वैसे greet नहीं किया. Although those were basics of hospitality like garlanding and tilak and whole, सब basic था. But even that basic I was welcome in a very hospitable way. I felt comfortable. I felt like a king, to be honest. So everybody was very welcoming. Everybody had a smile on their face and everybody was like कि मैं आ गया हूँ तो होटल का भाग्य खुल गया. It was like that. So in terms of general help, hospitality and the services, I would rate ITC Mementos 10 out of 10. The next parameter that we always take care is the ease for vendors. See, once you have booked the venue, once you are done with the hotel bookings and other things with the hotel, जब आप खाना और रहना sort कर लेते हो, then comes the main part of a destination wedding, actually, and that is the event planning. So event planning में there are a lot of vendors who need to come to the hotel and work. कभी-कभी बड़ी शादियों में तो guest से ज़्यादा vendor काम कर रहे होते हैं. It's a fact. So basically, we always see कि कितना easy है vendor के लिए वहाँ काम करना. So we saw that place जहाँ से vendor की सामान की entry होती है. We also went to that area की वहाँ की अप्रोच कैसी है. So unlike other hotels which are situated in the lake, वहाँ पे फेरी हायर करनी पड़ती है और ट्रक्स फेरी में जाते हैं, फिर वो you have to pay for that ferry and that is also charged to the client only. तो ऐसा नहीं है. There is a direct truck approach and वो ट्रक इनके लॉन तक आ जाता है which is called the फिरंगी पानी लॉन. You can collect all your stuff there and then you can move it to different venues. Different venues में move करने के लिए they have their own buggies. I was told initially कि वहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए आप रोने लगोगे और घुटने में दर्द हो जाएगा और आप थक के हार मान लोगे. It was not like that. There were, if I'm not wrong, they had 30 to 40 buggies with them. That too brand new. So 30 buggies would sort everything, I suppose. I think they had 50. I don't remember exactly. But itni hai. And that too brand new and luxurious. Not like a typical golf cart. Buggy में भी बैठ के लग रहा था you're sitting in a good vehicle. So basically, it is very easy for a vendor to work there. Decorators. So for decorators, उनका सामान आराम से आ जाता है. For event people, there is no restriction as such कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. The standard 5-star hotels rule
rules apply. No nailing, no pasting. और I hope all the vendors are familiar with that by themselves. और कोई भी अच्छी कंपनी ही काम करेगी वहाँ पे, और जो भी काम करेगा the standard 5-star rules apply. The good part about another ease for vendors is कि even in the open venues, क्योंकि आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, यू कैन प्ले म्यूजिक टिल लाउड. द जनरल ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इज कि 10:30 या 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक नहीं बज सकता इन दी ओपन. बट बिकॉज टू बी ऑनेस्ट नोबडी कम्स एंड नोबडी बॉदर जब तक कोई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ना हो आसपास, एंड देयर इज नो नथिंग रेसिडेंशियल आसपास. ऑल्सो अबाउट स्पेशल इफेक्ट, पायरोज, एनी काइंड ऑफ ब्राइडल एंड ग्रूम एंट्री, बहुत ही ईज ऑफ वर्किंग है. आई हैव बीन टू टफर आईटीसी लाइक आईटीसी आगरा, अदर आईटीज. वहां ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. आईटीसी, आई नो इट इज वेरी टफ टू वर्क इन आईटीसी. आईटीसी ग्रैंड भारत हो गया, आईटीसी मुगल आगरा हो गया, आईटीसी मौर्य हो गया. उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते करते ही आप वेंडर तो कह देता है भाई मुझे नहीं करना है यहाँ पे काम. तो नॉट एवरीबडी कैन वर्क देयर, बट मेमेंटोज अनलाइकली, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. यू हैव अ लॉट ऑफ ईज ऑफ वर्किंग देयर. आप जाओ, आप रूल्स फॉलो करो और आप सब कुछ कर सको. आई वुड एडवाइज टू इवेंट प्लानर्स और टेक अ गाइडलाइन फ्रॉम द होटल कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सो दैट स्पॉन्टेनियसली ऑन द डे ऑफ द इवेंट ये ना हो कि यार ये बोला नहीं था और वो बोला नहीं था. So on the ease for vendors working in the hotel, I would rate this hotel 10 out of 10. एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर और है which is nearby hotels. For example, there are 117 rooms. Out of these 117 rooms, if you multiply them by 234 people can stay in the hotel. Plus, अगर आप extra beds ले लेते हो like the villas and the residential villa and the grand presidential villa, 256 लोग का इनके पास तो beds है. Suppose आप 18 या 20 extra bed और ले लेते हो तो 275 people can easily accommodate in the hotel. So you don't need any kind of an extra bed. इतने तो इनके पास beds है for 260 people. Plus take some extra beds. आप 300 लोग भी प्लान कर सकते हो inside the hotel. I wouldn't recommend. I would recommend keeping the number from 220 to 275. Not go beyond it. But even if you are 300, you can still ask the hotel to accommodate your guests inside the hotel only. But say for example आपके 50-60 लोग ज्यादा हैं या लास्ट डे आने वाले हैं, उनके लिए देर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि एकदम आसपास या नेबरिंग कोई होटल नहीं है. यू विल हैव टू ट्रैवल फॉर 20 मिनट्स एटलीस्ट इन दैट बम्पी रोड टू रीच अ नियर बाय स्मॉल होटल, एंड दैट टू कोई बहुत बड़े होटल्स नहीं है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अनदर 5-star और अनदर सिमिलर कैटेगरी होटल नियर बाय मेमेंटोस. काम चलाऊ टाइप के रूम्स हैं आसपास इन द रेंज ऑफ 4,500, 6,000, 7,000 इन दैट रेंज, और वो भी 20 to 30. So you can, even if you have a gathering of say 350, you can think of ITC Mementos definitely. So the next parameter that we have for judging a hotel is the scenic beauty. So it is very hard to explain in words how beautiful the whole scenario was. वो bumpy ride which I am talking about, don't take it in the negative sense. You will enjoy that ride. It is a पूरा hill drive का experience है, जैसे आप नैनीताल जा रहे हो बट थोड़ी ठंड कम है because it's Udaipur. So it's like that. पूरे raw jungles हैं और पूरी hilly drive. So it's not as risky as the hills. It's a clean drive, but scenic beauty uncomparable. Udaipur में, see by default when you go to Udaipur or when you hear about Udaipur, all you have in mind is lakes. आप expect नहीं करते हो कि आपको hills and mountains and इतने सारी अरावली ranges एक साथ देखने को मिलेंगी. But yes, इस होटल में आपको वो देखने को मिलेगा. From the rooms, the view is immaculate. मैंने ऐसा view और उदयपुर के किसी भी होटल में नहीं देखा. I'm not saying it's the best view, but the view which I got is beautiful. You can see पूरा अरावली range एक side there are bareback mountains, और ऐसा लगता है यू आर इन अ डेजर्टेड माउंटेन एरिया. नथिंग इज देयर आसपास, कोई अर्बन नॉइज नहीं है, कोई आसपास आपको डिस्ट्रैक्ट करने की चीज नहीं है. ऑल यू सी इज द अरावली हिल्स. एंड आफ्टर द रेन्स इन फेब, इन मार्च, इन द primary season, those are covered with lush green grass. बहुत ही सुंदर लगता है. You have similar view from the venues. They have this lawn called the Firangipani lawn, which is around more than 20,000 square feet. सबसे बड़ा lawn है which can accommodate more than 1,000 people. So उस lawn से तो from one side you can see एक hill जिस पे rooms हैं, that is part of the hotel, and you can see पूरी Aravali range from one side. It is that beautiful. The poolside lawn which they have, it's a small lawn. उसमें you can do your छोटे events like your pre-wedding events, your मेहंदी, your हल्दी, your your Myra, those kind of events, which is event space नहीं है, so that can create a big problem. So their biggest lawn is their Firangipani lawn. It is more than 20,000 square feet, gathering of up to 1,200, 1,500 people. So although you're 300, you're 250 people, you don't have to worry about the space. You can cordon off a little bit of the area and do your events there. Beautiful view from that space, lush green grass, well maintained, and the approach is very easy. And then they have their second lawn, which is their enchanted forest. So this forest it's very close to the lobby. Your barat assembles at the lobby, and then they cross a bridge
and then they reach this area. This is one option of doing the wedding, the enchanted forest. So it has huge palm trees. जो lake का थोड़ा extension है like a river. That is alongside this lawn. So it's very beautiful. आपको you get a lakeside view like other hotels in Udaipur, and then you get a hill view also from this lawn, and then there are these trees. So in terms of decorating that venue, आप बहुत अच्छा decorate कर सकते हो. और a lot of the third lawn which they have is their poolside. The poolside which the hotel has, it is not as big as other hotels, but it's good. It's a good pool with a kid extension, with another extension for old people, and then the major pool. And then they have this 5,500 square feet approximately green patch. मैं इसको green patch ही कहूँगा as compared to the other venues. मैं इसको lawn नहीं कहूँगा, but okay, let's call it a lawn. And this poolside lawn is used for the smaller events. Like आप welcome lunch कर सकते हो, आप हल्दी कर सकते हो, मेहंदी कर सकते हो, मायरा भात टाइप का कोई छोटा इवेंट कर सकते हो, सहरा बंदी कर सकते हो. You can do n number of activities in the small lawn, but because this lawn can probably not accommodate everybody, but 150-200 की easy gathering हो जाएगी यहाँ. Then comes the delicacy of this hotel, that is their ballroom. So I've been to a lot of ballroom. I really appreciate Fairmont का ballroom. I really appreciate Raffles उदयपुर का ballroom. Then ताज आगरा का ballroom. But जो यहाँ का ballroom, when I saw the pictures, I was like, ये हो नहीं सकता. This is a 3D sampled image of an architect. ये ऐसा ballroom नहीं बना सकता. But when I went to that area, when I saw the banquet, beautiful. It's not that as big as other banquets. It's around 6,000, 7,000 square feet. It's decent enough for 300 people. But in terms of the beauty, it has a very fresh vibe to it. It's all very palatial. ऐसा लगेगा आप किसी राजा महाराजा की शादी में आए हुए हो. And then there is a pre-function area. So imagine a banquet of 6,000 square foot with a pre-function area of 9,000 square foot. So half of that pre-function area is at the backside of the ballroom. जहाँ पे you have your buffet spread, your live counters and everything. And half of that area is the entry porch. So 4,000 square feet on one side, 6,000 square feet as the main ballroom, and another 4,000 square feet on the other side for your live counters and the buffet spread, which is like decent enough for this kind of a gathering. Then they have their own marble bar which they have made. There are 2 bars which are already there at the hotel. There is a marble bar counter in the entry area which is decent enough to serve all your mocktails and welcome drinks. And then there is a small room right across where you set your main stage. वहाँ पे एक already marble का granite का बहुत सुंदर बार बना हुआ है stone का, which is decent enough to serve everybody. So you can do a LED bar or an ice bar inside. But I was happy with the bar which they already have. In terms of event venues, to sum this up, in terms of event venues, I will give this hotel 10 on 10. अब आता है सबसे जरूरी point. That is the 10th parameter on which we judge a hotel, and that is the price point. तो अब सबके कान खड़े हो गए होंगे कि अरे वाह, इतने अच्छे rooms, इतने अच्छे venues, 10 on 10 ratings, ये hotel तो बहुत अच्छा है भी. There is no doubt about it. But I'll tell you what the problem is. Problem is the price point. It is not a problem for people who have it. It is a problem for people जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन जेब में एक रुपया नहीं है. कोई बात नहीं. I'll tell you the price point. I'll tell you how to calculate a per person cost for Mementos ITC Udaipur. So as I told you, 117 rooms हैं. 117 rooms में 260 बेड्स तो हैं, राइट. अप्रोक्सीमेटली ये होटल मिलता है 2 करोड़ 60 लाख रुपए. ये 2.6 CR अप्रोक्सीमेटली. डिपेंड्स अपॉन द सीजन कि उस पर टैक्स है या वो टैक्स इंक्लूसिव प्राइस है. टैक्सेस तो होते ही हैं और सारे रूम्स का लगभग सेम प्राइस है. दे गिव यू अ बाय आउट एवरी रूम, ऑल द विलास, ऑल द प्रेसिडेंशियल विलास, ऑल द वैली व्यू रूम्स, ऑल द हिल व्यू रूम, सब मिलेगा इस 2.6 CR के प्राइस में जो मैंने आपको बताया. अगेन प्लीज डोंट मार्क माई वर्ड्स की 2.6 ही है. समर्स में कम हो जाता है, पीक डेट्स पे बढ़ जाता है, साइड डेट्स पे बढ़ जाता है. इट इज ऑलवेज अ डायनामिक रेट. प्लीज डोंट से होटल में जाके कि शादी ओवरसीज वालों ने बोला था कि 2.6 CR है, 2.6 CR है, आप ज्यादा क्यों बोल रहे हो. होटल, वी आर नॉट द रेट गिवर. द होटल इज द फाइनल प्रोवाइडर ऑफ द प्राइजेस और वो कभी भी उसको बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं. बट जो मैंने आपको एवरेज प्राइस बताया, दैट इज फॉर द मेन सीजन विच इज फ्रॉम अर्ली नवंबर और मिड ऑफ नवंबर टिल एंड ऑफ फेब या स्टार्टिंग ऑफ मार्च ऑल्सो. दिस इज द प्राइमरी सीजन इन उदयपुर. सो मान लीजिए इट इज 2.6 CR एंड देयर आर 260 people. So ये पड़ा 1 लाख रुपए per person for 2 nights. So which makes it 50,000 rupees per person per night. तो आप प्राइस पॉइंट को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने 260 लोग बुलाए एंड आई एम पेइंग 50,000 per person per night. ये मेरा टोटल बजट आएगा फॉर बुकिंग द होटल. दिस डज नॉट इंक्लूड द इवेंट वाला पार्ट, द डेकोर वाला पार्ट, द फोटोग्राफर्स, द आर्टिस्ट या कुछ भी. दिस इज जस्ट योर फूड, just your accommodation. Even the travel is not included. So ये बहुत कंफ्यूजन होता है. लोगों को कहते हैं अच्छा 2.6 में मेरी शादी करा दो. अरे भाई होटल बुक कर लो, खाना बुक हो गया, होटल बुक हो गया, चाट वाले आ गए, सब कुछ हो गया, बट इवेंट तो कराना पड़ेगा. So to calculate that event cost, I'll again give you a straight simple calculation का मेथड कि जितनी महंगी भैंस उतनी महंगी भूसी. As simple as that. So
अगर आप किसी ऐसे होटल में काम करने जा रहे हो जो होटल आपसे 40 लाख रुपए ले रहा है फॉर 200 पीपल, यू वोंट स्पेंड 1 CR इन दैट होटल फॉर एन इवेंट, यू विल नॉट, क्योंकि इट वुड लुक वेरी ऑड। आपने 40 लाख का होटल किया और आपने 1 करोड़ 2 करोड़ का इवेंट करा दिया। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट पॉसिबल, लोग करते हैं कभी कभी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, लोग ऐसा करते हैं। एंड देयर इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, वो कहते हैं भाई होटल के रूम्स एवरेज भी चल जाएंगे, इवेंट मेरा आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। तो देयर इज दिस मेंटालिटी इन द मार्केट आल्सो। जनरल कैलकुलेशन करूं तो इफ यू आर स्पेंडिंग 2.6 CR ऑन द इवेंट, से हायर अ वेरी गुड फोटोग्राफर, गेट इट कैप्चर्ड फ्रॉम समबडी। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस की महंगा करो, बट अच्छा करो। हायर समबडी हु कैप्चर्स द वे दैट यू वांट इट टू बी। तो आप सबके प्रोफाइल चेक करो एंड देन यू हायर अ फोटोग्राफर फॉर इट। ऑन एन एवरेज आप एक 50 से 60 लाख रुपए का अमाउंट देख रहे हो, विच यू विल हैव टू स्पेंड इन दैट होटल टू मेक इट वर्थ, राइट? You will have to hire a good photographer, you will have to hire a good wedding planner, you will have to hire a good wedding decorator, you will have to call in some decent artists. सो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट चैलेंजिंग यू कि आप 15 लाख में नहीं कर सकते हैं, 5 लाख में नहीं कर सकते, आप फ्री में भी कर सकते हो। आप जाओ, खाना सर्व हो जाएगा, आप खाना खिला दो, छोटी छोटी एक स्टेज लगा लो, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल इफ यू आर डूइंग इन दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। आई कैन अंडरस्टैंड द गेस्ट लिस्ट इज सच, लोगों को करना पड़ता है। सो द एवरेज फिगर दैट यू शुड हैव इन माइंड इज अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs to 60 lakhs फॉर द ओवरऑल इवेंट पार्ट। अगेन ये सब बजट स्पेसिफिक चीजें होती है। लोग 10 करोड़ रुपए का इवेंट भी करा लेते हैं, लोग 5 लाख रुपए में भी खत्म कर देते हैं। सो इट इज, डोंट स्क्वीज योरसेल्फ, जस्ट यू नो व्हाट योर पॉकेट अलाउज यू टू डू, आप उतना ही खर्च करो, बट दिस इज द एवरेज फिगर यू लुकिंग एट। सो इफ यू हैव अ बजट ऑफ से 3 crore फॉर अ 250 पीपल गैदरिंग, दिस इज योर प्लेस टू बी। Right now, in Udaipur, a tourist is gazing at a 100-year-old monument, while these natural monuments have been waiting for millennia. Elsewhere, a tourist has reached the lake early, only to see that hundreds of tourists had exactly the same idea. Somewhere, a tourist is craning her neck to look at a palace that looks exactly like the one she saw 3 palaces ago. Somewhere in the city, a tourist is stuck in traffic, looking for a way out. Elsewhere, a tourist is waiting a royally long time for her royal thali. Somewhere in the city, a child is looking up, only to find that most of the stars are hidden. Elsewhere, a tourist is standing in a queue while trying to sneak a good table. Somewhere in Udaipur, a new couple is getting married at the same old venue. They are all looking elsewhere for the best memories, if only they knew where to look. Witness an unseen Udaipur at Mementos by ITC Hotels, Ekaaya Udaipur. Mementos by ITC Hotels. Memories available.